Hi you guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Nehal, and if you're new to this video, it would be really great if you could just take out 2 seconds of your time and subscribe to my channel below. It's just so funny कि मैंने नया vlog start कर दिया and I'm editing the first vlog right now. First vlog after I think a month. मतलब मेरे साथ सबसे बड़ी problem क्या है कि I love what I do, right? And आई लव क्यूरेटिंग कंटेंट लेकिन जब एडिटिंग पे बात आती है ना बिकॉज आई एम लाइक वन वुमन आर्मी व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड आई हैव नो एडिटर आई हैव नथिंग मैं ही शूट करती हूँ मैं ही एडिट करती हूँ मैं ही सब कुछ करती हूँ सो एट टाइम्स विद माई वर्क इट गेट्स वेरी वेरी टैक्सिंग सो अभी जो मेरा लास्ट वीक का व्लॉग था वो मैं अभी करंटली एडिट कर रही हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अनदर व्लॉग विच इज फाइन आई थिंक कभी कभी चलता है सो द करंट अपडेट राइट नाउ इज दैट इट्स 3rd of July which means that my birthday month's here and I get very very excited when I enter July because it is my month. So my birthday falls on the 15th of July. This entire month makes me so happy. And since it's Thursday today, it means the weekend is very very near. So मैंने last vlog में mention किया I have a wedding to attend this weekend. I'm going to Pushkar and सब outfits वगैरह सब sort हो गए and I just need to go there, show up, have fun and everything. And I'm going to take you guys along with me if possible. अगर मैं व्लॉग कर पाई तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं व्लॉग करूंगी बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता राइट नाउ आई एम पुशिंग ऑफ टू एन इवेंट जुरासिक वर्ल्ड का राज मंदिर में प्रीमियर हो रहा है फन फैक्ट आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 11 years माई होम टाउन इज जयपुर and I've never been to Raj Mandir. I mean, I don't know what to say for that, but it is the first time ever that I'll be going to Raj Mandir, and I'm going for an event. It's going to be a very very nice event. I feel because काफी influencers आ रहे हैं, pan India काफी influencers आ रहे हैं, so they're doing it on a very very big scale. And I just thought that I'll take you guys along with me. So yeah, I'll see you at the event. And since it's my birthday month, I gifted myself something. I gifted myself this beautiful tennis bracelet. I've been wanting one for the longest time. मुझे कहीं भी अच्छा कहीं डिजाइन अच्छा नहीं था कहीं क्वालिटी अच्छी नहीं थी I finally got my hands on one of the most beautiful pieces. Isn't it so pretty? तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आई यूजुअली लाइक स्टैकिंग अप माई ज्वेलरी सो आई हैव अ ब्रेसलेट इन द मिडल वैन क्लीफ एंड दिस gorgeous tennis bracelet that I got my hands on. Isn't it so gorgeous? I begin to I begin to Hi guys, it's the next day. कल का event इतना अच्छा था. I did not expect it to be so good. This was the first time that I had visited Raj Mandir and I was stunned. मतलब बीच में मैंने ऐसा सुना था कि उसने अपना essence खो दिया है and it's not maintained and everything. But oh my god, I think renovate हुआ है बीच में. And it was so beautiful. आपने clips देख ही ली है. It was so nice. I met my favorite creators. I was so excited to meet them. I did not expect them to be there क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं. It was so much fun. They're so sweet. And Ashish Chanchlani and Nagma and all were also there. So it was a fun event. It was nice. It was great meeting so many influencers from Jaipur, from outside of Jaipur. So in short, it was a very very nice event. और हमें ये क्यूट छोटू सा टॉय मिला डायनासोर वाला इट्स सो स्क्विशी एंड इट्स सो नाइस इट्स it's damn cute and yeah I have to get ready for मेहंदी right now जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक शादी में जाना है इस weekend so the wedding festivities begin today I don't know if I'll be able to vlog. If I'm able to vlog, मैं उसका एक अलग vlog बनाऊंगी. It's so funny कि मैं back to back इतने सारे vlogs बना रही हूँ, but editing का time ही नहीं मिल रहा है. कल मैंने edit करना start किया था, but then I realized that I was getting so late for the event कि मेरे को उसको बीच में छोड़ना पड़ा. अब now I have to go to Pushkar for a wedding, so I hope मुझे बीच में time मिल जाए edit करने का.
hope for the best. But yeah, I think I'm gonna end the vlog here. And आज मैंने अपना tennis bracelet अपने watch के साथ pair किया and it's looking so nice. I'm so obsessed with this already. And yeah, thanks for watching. I really hope that you enjoyed the vlog. खैर कुछ ज़्यादा था नहीं इस vlog में. कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं था vlog. But yeah, I love the kind of support that you've been pouring in. चाहे मैं consistent हूँ, चाहे मैं inconsistent हूँ, आप लोगों का प्यार हमेशा वैसा का वैसे ही रहता है. And lots of kisses for that. And yeah, I'm gonna see you in the next one. Hopefully, the wedding vlog. If not, then some other one. But I'm gonna see you soon for sure. Don't forget to like, share, and subscribe. And you know, I love you.